So hi everyone. Good morning. I hope I'm audible. Am I audible? Right. So let's start with today's session now. Today is 19th of May 2026 and we'll start with today's analysis. And the first important news item that we have with us is related to the bail in the cases of offenses related to UAPA 1967, Unlawful Activities Prevention Act of 1967. So let's start. Yeah, I mean, okay, so we can start now. So this is the first news item that we have to cover in today's analysis, and it is related to a recent judgment a recent order passed by the Honorable Supreme Court of India. And this order is very important because it has changed a long-standing position of the Supreme Court of India in cases or in offenses related to Unlawful Activities Prevention Act 1967. So let's start with the discussion now. Okay. So offenses related to UAPA, right? Bail, bail in offenses related to unlawful activities Prevention Act UAPA 1967. Right, students. So this particular order will change a long-standing position of the Supreme Court of India. So let's start with this discussion now, and we'll have like a very detailed. We'll have a very detailed discussion about this particular topic, and a proper understanding of this particular topic is of extreme importance. So what is the case title? Case का नाम क्या है जिसमें Supreme Court ने ये judgment pronounce किया? सैयद इफ्तिकार अंद्राबी versus NIA. सैयद इफ्तिकार अंद्राबी versus National Investigation Agency Jammu, and the case was related to narco terror. Right. So this is a brief background of this is a brief fact sheet of this particular case. Now, first thing first, before going into the details of this particular topic, we have to understand one important position of the Honorable Supreme Court of India. And what is that position of the Supreme Court of India? Bail is the rule. Jail is an exception. So students, when we talk about the principles related to criminal law in India, this is one of the most important thing that we have to understand. This is one of the most important principles, that bail is the rule, jail is an exception. But there are certain statutory offenses जहाँ पर अभी तक क्या था कि जो पूरा burden होता था innocence का, वो पूरा का पूरा burden accused पर shift कर दिया जाता था, right? That accused has to prove that he was not involved in the commission of that particular offense. Now let's come back to the newspaper. We'll read this article, then we'll move into the discussion, right? So the Supreme Court on Monday voiced serious reservations about various aspects of its January judgment, refusing bail to former JNU students leader Umar Khalid and co-accused Sharjeel Imam in the Delhi riots larger conspiracy case, including the foreclosing of their right to seek bail for a year. The rare act of self-reproach came over a year after the court condemned Mr. Khalid and Mr. Imam as alleged masterminds who hatched the conspiracy behind the 2020 Delhi riots. At the time of the rejection of his bail plea, Mr. Khalid has already spent over 5 years in prison as an under trial. So basically, this is something which we have to understand. So this year there was a very important development. अब Delhi में
कोविड के टाइम पे दिल्ली में बहुत इन फेमस राइट्स हुए थे, दिल्ली राइट्स जिनको हम बोलते हैं। और इसमें दो अक्यूज ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, उमर खालिद एंड शर्जील शर्जील इमाम. Now these two individuals are in jail since 2020. It's been 6 years now कि इन लोगों को अभी जेल में रखा गया है. इनकी अभी जो चार्जशीट है वो चार्जशीट तक नहीं फाइल हुई. द ट्रायल इज येट टू कमेंस. नाउ दीज टू पीपल, उमर खालिद एंड शर्जील इमाम, इनके अगेंस्ट यूएपीए के अंडर चार्जेस फाइल किए गए थे. एंड यूएपीए is a law related to national security. तो नॉर्मल जो क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स होते थे वो यहां पर अप्लाई नहीं होते थे, राइट. नाउ सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 being a special law, so most of the provisions related to most of the principles related to criminal law were not applicable. But the Supreme Court of India in the case of Sayyid Iftikhar Andrabi versus National Investigation Agency Jammu has laid down a very detailed and a very strong position. So let's talk about that particular position of the Supreme Court. So Supreme Court has said bail is rule, jail is an exception under UAPA and statutory restriction. Now we'll talk about what is this statutory restriction. Statutory restrictions under section 43D clause 5. Under section 43D clause 5 cannot override what? Constitutional guarantees. Constitutional guarantees under Article 21 and 22 of Indian Constitution. So this is the most important observation made by the Honorable Supreme Court of India in the case of Sayyid Iftikhar Andrabi versus NIA Jammu. Now, what is section 43D clause 5? So section 43D clause 5 of the UAPA 1967 is, one of the most important article, क्योंकि यही वो section, this is the most important section. And why I'm saying this is one important section, because the statutory restriction to deny bail flows from section 43D clause 5. What is the provision of section 43D clause 5, which makes it one of the most important point of discussion when we talk about Unlawful Activities Prevention Act 1967? So basically, we have to understand the important provision under section 43D clause 5. So 43D clause 5 में क्या students, आप इसे आप एक बार देख लीजिए. Then we'll discuss about what is the exact law under 43D clause 5, which empowers the court to deny the bail, which allows the court to deny the bail even if there was reasonable grounds to believe that the case against the accused was prima facie true. Right. So let's talk about section 43D clause 5.
Now, what is section 43D clause 5? So, it empowers the court. Not empowers, basically it laid down a provision that it required a court to deny bail. In under what circumstances the court can deny the bail? If there was reasonable grounds if there was reasonable grounds to believe that the case against accused that the case against the accused is prima facie true. Right. So this is given under section 43D clause 5 कि अगर कोर्ट के पास में ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है, अगर कोर्ट को लगता है कि यूएपीए 1967 के अंडर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अक्यूज के ऊपर, दोज एलिगेशंस आर प्राइमा फेसाई ट्रू, देन द कोर्ट हैज टू डिनाई द बेल. Right. So this is there in 43D clause 5. Now, if you look at section 43D clause 5, somehow it has an it has an overriding effect on Article 21 and 22 of the Indian Constitution. Now, Article 21 talks about right to life and personal liberty. And what is Article 21? That no one can take your life and personal liberty except the procedure established by law. And what is Article 22? So Article 22 is basically protection against arrest and detention. So these are the two most important articles when we talk about the rights of an arrested person. That no one can take your life and personal liberty except the procedure established by law. Right. So law is that bail is rule, jail is an exception. Right. Now, if we look at section 43D clause 5 of UAPA 1967, one thing is absolutely clear, that there is a word that is it required. So required का मतलब क्या है कि कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है. इफ कोर्ट बिलीव्स कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, अगर कोर्ट को लगता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए वो चार्जेस ट्रू हैं, देन द कोर्ट हैज टू डिनाई द बेल. नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 43D clause 5? So basically section 43D clause 5 का स्टूडेंट्स इंपैक्ट है that it shifts entire burden on accused. Right. Now the next point that we have to understand when we talk about the principles related to criminal law, there is a very well settled principle, and what is that well settled principle? That prosecution has to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. So this is also a well settled principle of criminal law, that it is always the prosecution कौन होता है? जो स्टेट के लिए केस को कंटेस्ट कर रहा होता है, जो बेसिकली किसी अक्यूज्ड को पनिशमेंट दिलवाना चाहता है. सो इट इज ऑलवेज द प्रोसिक्यूशन विच हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड द रीजनेबल doubt. But section 43D clause 5 of the UAPA 1967 shifts the entire burden from the prosecution to the defense.
राइट। अब अक्यूज को ये प्रूव करना होगा अगर उसको बेल चाहिए अंडर सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ द यूएपी एक्ट 1967 दैट ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द अलेज्ड ऑफेंस। बट जर्नल प्रिंसिपल इज कि अक्यूज को प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है दैट अक्यूज वाज इन्वॉल्व्ड इन द केस। नाउ सो बेसिकली this particular principle violates the very basic well settled proposition of the criminal law, which is that the prosecution has to prove the guilt of the accused beyond the reasonable doubt. And in India we follow a very well settled law. In India we follow a very well settled law. And what is that well settled law? Then an accused is innocent until proven guilty. What is that long standing proposition? That an accused is innocent until proven guilty. We follow adversarial justice system which says कि innocent is accused हम तब तक innocent रहता है जब तक उसका guilt beyond reasonable doubt court of law में prove नहीं हो जाता है. But this particular principle is also changed अंडर यूएपीए. एंड हाउ इट इज चेंज? क्योंकि अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट यूएपीए के अंडर केस रजिस्टर हो गया है तो उसको फर्स्ट डे से ही इनोसेंट है, उसको गिल्टी माना जाता है, उसको ये प्रूव करना होता है दैट ही इज इनोसेंट, राइट? सो दिस चेंज द वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. द कोर्ट हैड मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर, right? And what is that well settled observation made by the Supreme Court in the case of in this particular case? So let's talk about that well settled principle. So section 43D clause 5 is a statutory restriction. So court has said statutory restrictions can be there when statutory restrictions can be there when alleged offense is committed. Alleged offense is committed under National Securities Act, but it cannot override the constitutional guarantees provided under Article 21 and 22. The Supreme Court has said कि we accept that कि statutory restriction हो सकता है जब कोई भी offense नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट नहीं, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटीज होना चाहिए, कि हम स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन के पूरे प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस नेशनल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कमिट किया गया. बट हमेशा ये चीज याद रखिए दैट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 and 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि आर्टिकल 21, और let's not talk about article 21 and 22, let's talk about fundamental right itself. So in 1973 the Supreme Court of India devised a very important mechanism which is known as doctrine of basic structure, right? In the case of Keshwananda Bharti versus state of Kerala, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था ना कि जो भी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट चेंज इट, and fundamental rights are one of the most important components of the doctrine of basic structure. So there might be certain statutory restrictions under UAPA 1967, section 43D clause 5 might be there, but at all circumstances, at every particular circumstances, it will never override the constitutional guarantees provided under article 21 and 22 of the Indian constitution, right? अब आप ये बता दीजिए, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? Yes or no?
फटाफट आप बता दीजिए यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं, हाँ या ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं. And there is one more thing that we have to understand, students, that when we talk about this specific piece of legislation, UAPA 1967, तो UAPA में जो कन्विक्शन रेट है 2019 से लेकर के 2023 के बीच में, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दिस वेरी एग्जिस्टिंग फैक्ट, और इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते. एंड व्हाट इज दिस एग्जिस्टिंग फैक्ट कि द कन्विक्शन रेट in offenses related to UAPA between 2019 to 2023 has been somewhere between 1.5% to 4%. तो अगर कन्विक्शन रेट इतना कम है उसके बावजूद अगर किसी अक्यूज्ड को आप बेल नहीं दे रहे हैं, सो इट इज बेसिकली अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल्स गिवन इन आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप बता दीजिए आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यस और नो, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अरे कुछ बोल दीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. And Supreme Court has also, cited one important judgment of the apex court only. This judgment is of 2021, right? So let's talk about that particular judgment as well. अब इस judgment को आप लोग को याद रखना है. The judgment is Union of India versus K.A. Najib. सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और अभी क्लैरिफाई किया. एंड व्हाट वाज दैट ऑब्जर्वेशन इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब? सो द ऑब्जर्वेशन वाज बेसिकली, इट वाज वेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ bail, there is a possibility of bail on violation of Article 21. So the court has made it absolutely clear that you cannot keep a person in jail for an indefinite period of time. And why the court cannot, the authorities cannot keep it for an indefinite period of time? Because it will violate Article 21 and 22 of the Indian Constitution. Article 21 is right to life and personal liberty, and Article 22 is basically the protection against arrest and detention, right? Now moving on to the next important aspect. अब हम न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा आ जाते हैं. Just give me a minute. Now let's come back to our article, this article in the newspaper again. So on Monday, a bench of Justice B.V. Nagratna and Ujjal Bhuvan said bail was indeed the rule in UAPA cases too. Justice Bhuvan, who authored the judgment, said the catchphrase "bail is the rule and jail is the exception" was not just an empty slogan, but a constitutional principle flowing from the fundamental rights to life, speedy trial, and freedom from arbitrary arrest and detention. So basically, when we talk about the rights of the arrested person, one of the most important right is a speedy trial. Now, Sharzil Imam and Umar Khalid, these two individuals are in jail since 2020 and trial is yet to commence, right? So somehow we have to understand that though the allegations might be very serious, but again, at the end of the day, these are the allegations. The authorities has yet to file a charge sheet. There has to be a trial, and at the end of the trial, at the conclusion of the trial, it would be decided whether these two individuals are culprits or not. So in a particular scenario, when it is not clear whether these individuals are culprits or not, you cannot keep them in jail for this long period, because it will ultimately violate Article 22 of the Indian Constitution, right? So now moving on to the next important point. So finally, the Supreme Court has granted bail
टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे हम शर्जील इमाम और उमर खालिद केस को बस हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर्टिकुलर केस में जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी थी, और बेल डिनाई करने का मेन रीजन क्या था? सेक्शन 43D क्लॉज 5, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी स्ट्रांगली बिलीव कि इन अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो चार्जेस प्रेस किए गए या जो एलिगेशंस लगाए गए, दीज एलिगेशंस आर एब्सोल्युटली true, there is some substance in it, and as per the provision of section 43D clause 5, अगर कोर्ट को ये रीजनेबल ग्राउंड है, अगर कोर्ट के पास में रीजनेबल ग्राउंड है, अगर कोर्ट को लगता है दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड अंडर सेक्शन 43D clause, द ऑफेंस वाज कमिटेड अंडर यूएपीए 1967, देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट द बेल। और साथ में कोर्ट ने यह भी बोला कि अब आप 1 साल तक कोर्ट के सामने बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। बट ये जम्मू का जो अक्यूज था टेरर, नार्को टेरर में जिसको अरेस्ट किया गया था, ही वाज इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड हिम बेल, citing bail is a rule, jail is an exception. This particular principle is also extends to the offenses committed under UAPA 1967, because at the end of the day rights of the arrested person are also very important. Now please tell me if you have any particular doubt from this particular topic, any specific doubt under this particular topic, then we can discuss your doubt, otherwise we'll move to the next topic. अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, आई विल वेट फॉर अ मिनट, बिकॉज दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक वेयर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो we had discussed this topic इन 5 स्लाइड्स। आप इसको थोड़ा सा, अगर किसी को समझ में नहीं आया, आप वापस जाकर के इसको रिविजिट कर सकते हैं, विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स माय श्योरिटी टू यू। दिस इज फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट स्लाइड, राइट। तो अगर अभी आपका कोई डाउट है तो आप इसमें से पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कैन यू जस्ट गिव अ समरी ऑफ कंटेंट वंस अगेन? ठीक है। सो बेसिकली देयर वाज एन अक्यूज जिसके अंडर यूएपीए के अंडर चार्जेस फाइल किए गए थे, यूएपीए 1967 के अंडर, एंड यूएपीए इज अ लॉ रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। नार्को टेरर के चार्जेस थे। अब हुआ क्या कि दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड एज पर सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ द यूएपीए 1967, अगर कोर्ट को लगता है कि जो चार्जेस अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे हैं, इफ द कोर्ट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स कि वो एलिगेशंस ट्रू हैं, देन द कोर्ट will reject the bail application. This is there in section 43D clause 5 of the UAPA 1967. This is a long standing position. अब मैक्सिमम केसेस में जो यूएपीए के अंडर कोई बेल अगर ग्रांट करता था तो उसमें कोर्ट बेल ग्रांट ही नहीं करता था, वो बोलते थे कि हमको ऐसा लगता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स कि आपने कोई ये ऑफेंस कमिट किया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को चेंज करते हुए ये बोला, नाउ देयर इज अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, एंड दैट वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, राइट। सो बेसिकली कोर्ट ने बोला है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर यूएपीए 1967, because okay, right. So now I'm explaining it in Hindi, English only, right? So bail is the rule, jail is an exception. This particular principle extends to the offenses committed under UAPA 1967 as well. So right to give bail or right to seek bail is one important right of the arrested person. Now at the end of the day we have to understand one more thing, that in India we follow a very well settled principle of criminal law, that is an accused is innocent until proven guilty. But when we talk about offenses committed under UAPA 1967, pura ka pura the entire burden was shifted on accused, that the accused has to prove that he was not involved in the commission of that particular offense. So it used to change the entire position of the criminal law. So yesterday the Supreme Court of India has given more importance or more value or more weightage to Article 21 and 22 of the Indian Constitution, because Article 21 says this, that no one can take your life and personal liberty except the procedure established by law, and Article 22 advocates right to speedy trial. If the trial has not commenced yet, it is not the fault of the accused, but it is the fault on the part of the authorities, right? So yesterday the court granted bail to this particular accused who was in jail for 5 years. Now Mr. Hari Gautam, getting my point? Now Hari Gautam,
अगर समझ में आ गया आप लोग को तो फटाफट से फिर यू नो द ड्रिल, राइट? यू हैव टू लाइक द वीडियो, राइट? सो या बता दीजिए फटाफट आप लोग को समझ में आ गया, yes or no? Then we can move to the next point because we have already discussed everything about this particular topic. Just give me a hint कि आप लोग को समझ में आ गया, then we can move to the next part. You just have to type 3 letters YES. सर भी मत टाइप करिए, yes टाइप कर देंगे, I'll understand. अरे मुझे अभी ना बहुत बढ़िया जोक आ रहा है, I won't crack it because that will break the flow of the class. So समझ में आ गया तो now moving on to the next point. So Modi meets Norwegian Prime Minister as they upgrade their ties to green strategic partnership. So Mr. Modi has met his counterpart from Norway. और नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोनस गैरस्टॉ. Jonas Gahr is the Prime Minister of Norway, and they had a very, these two individuals had a very progressive conversation, and they have also upgraded their ties to green strategic partnership, where these two countries will focus more on the aspects involved in the sustainable development. Now, a lot of, uh, conversation took place between these two leaders, and they also talked about the impact of West Asian conflict, and they also talked about that we support diplomacy when it comes to war. We don't support use of military weapons, right? So there was something written by Netherlands from Chola dynasty, उसका नाम क्या था? So yesterday we discussed about it, Navya Sharma, कि वो राज Chola one, who was a very popular king of the Chola dynasty, 985 से लेकर के 985 से लेकर के 1014 कॉमन एरा जो था, सीई कॉमन एरा का जो टाइम था, इसमें चोला डायनेस्टी के एक बहुत फेमस किंग थे जिनका नाम था राज. I've just forgot. I just forgot the name. Uh, Raj. Anyone? What was the name of that particular ruler? I have to, like, it just skipped from my mind. I'll just tell you. Raj Chola one. I guess it was Raj Chola one, but I'll see it. Yes, it was Raj Chola one. Right. So Raj Chola one. इनके टाइम की कुछ कॉपर प्लेट्स थी. These copper plates were in Netherlands, and so these copper plates were returned to the Indian authorities. So this was related to this particular case. So Rajendra Chola, right? So Raj Chola one, right? He was a very popular king of Chola dynasty. इन्हीं के टाइम की copper plates थी. These copper plates were returned to the Indian authorities. Now coming back to our topic again, students. So basically a lot of important conversation has taken place around the impact of the West Asian conflict and importance of West Asian conflict on the global economy. And also last year we signed a very important free trade agreement with a group called EFTA, European Free Trade Association. There is a group which is known as European Free Trade एसोसिएशन. इसके साथ में हम लोगों ने लास्ट ईयर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था. और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, नॉर्वे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर. Norway was also the part of this particular group. Norway, Switzerland, Iceland and Liechtenstein, right? So basically Norway भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे ना. So basically this entire visit of Prime Minister Narendra Modi to 5 countries is of utmost importance to the India because of the changing world order, because of the multipolar world. These countries are of utmost importance. That's why India is giving a lot of importance to them. And every particular bilateral visit involves one important thing, and that particular thing is the increase in the bilateral trade between the countries, right? Now moving on to the next important point. So yesterday Narendra Modi set a world record. Now it is not actually a world record, but yesterday he was awarded. Now please इसको आप लिख लीजिए. This is very important for your examination. For every law entrance examination, this is one important topic.
So yesterday स्वीडन, क्या किया स्वीडन ने? स्वीडन हैज प्रेजेंटेड its highest civilian honor to प्राइम मिनिस्टर मोदी. अब ये इनके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार. रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस. रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड Cross. This is the highest civilian honor of Sweden. It was presented to Prime Minister Narendra Modi, and it was presented by Her Royal Highness Crown Princess Victoria. Her Royal Highness, Her Royal Highness, Her Royal Highness Crown Princess of Victoria. Crown Princess Victoria presented the highest civilian honor of Sweden, which is Royal Order of the Polar Star, Commander Grand Cross, to Prime Minister Narendra Modi, and it was Narendra Modi's 31st international honor. ठीक है, तो आप ये भी लिख लीजिए प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल. इट इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. Yeah, Crown Princess of Victoria, right? So you can write this particular point, then we can move to the next point of discussion, the next point which is very important. Then we have two more important points to discuss. The first one is related to the reform in the National Testing Agency, and the second one is basically it was related to the Ebola outbreak, and World Health Organization has declared it as a public health emergency of international concern. So once you have written this, please inform me. We'll move to the next point. The highest civilian honor of Sweden was presented to Narendra Modi, and the award is popularly known as Royal Order of the Polar Star, Commander Grand Cross, and it was presented by Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden, and this was Prime Minister Narendra Modi's 31st international honor. And also remember this, there are two kinds of award. One is civilian awards and the other one are gallantry awards. Civilian awards जो होते हैं वो civilian population को दिए जाते हैं, और gallantry awards जो armed personal services में होते हैं उनको दिए जाते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम क्या है? भारत रत्ना. राइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. So Iran has submitted a new peace proposal, says US, open to waiving sanctions. So basically a lot of things are going around this particular war. The Islamic State of Iran has presented another important proposal through Pakistan, because Pakistan is acting as a mediator when it comes to this particular West Asian conflict. Pakistan ही सारी peace negotiations को अभी mediate कर रहा है, intermediary की तरह काम कर रहा है. तो ईरान ने एक और Iran has presented a fresh proposal, 14-point fresh proposal, and in the latest development, United States of America has agreed that it will defroze 25% of the frozen assets. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो भी असेट्स फ्रीज किए हैं ईरान के, उसके वो 25% असेट्स को डीफ्रोज कर देगा. सो इट विल गिव और इट विल प्रोवाइड सम लिक्विडिटी टू ईरान. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ईरान इज सेइंग दैट इट इज विलिंग टू keep its enriched uranium in Russia, but United States of America is saying that we want your enriched uranium, but somehow now at this point of time United States of America is showing some kind of leniency towards the nuclear program of Iran, whether when it is considering that it might allow the operations of certain nuclear power plant. So these are the two important developments related to this particular peace talks, and at the hindsight of this entire peace negotiation there is one more important thing. So as per the internal reports, United States of America and Israel are planning a fresh wave of strike on Iran, and that's why we discussed yesterday that Iran is basically they are basically
उन्होंने क्या किया, दे आर बेसिकली यू नो ब्रॉडकास्टिंग हाउ टू ऑपरेट एन AK-47 ऑन द नेशनल टीवी, राइट। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी एंटिसिपेशन है दैट द वॉर माइट कमेंस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ VD Satishan has been sworn in as the new chief minister of Kerala along with 20 ministers. So yesterday we discussed about this particular thing. Now Arvind, Mr. Kejriwal will take it as a win, because after a lot of struggle by Mr. Kejriwal, finally he is successful in getting a particular order in his favor. So basically when the Rouse Avenue court, it's a court in Delhi, Rouse Avenue court, jahan par Arvind Kejriwal and along with Mr. Arvind Kejriwal, there were 20 more accused against whom the trial was going on in a case related to excise policy scam. Now, Rouse Avenue Court acquitted these 21 accused, and finally, Central Bureau of Investigation went into appeal to the Delhi High Court. Now, in Delhi High Court, the case was allocated to Justice Swarnakanta Sharma, and Mr. Kejriwal was against this particular thing because he said Justice Swarnakanta Sharma is basically a supporter of the political ideology of the ruling party, where she has participated in the multiple gatherings organized by the organizations which follow the political ideology of the ruling party. See, he also gave multiple examples, and after that a lot of development taken place. Now finally a case has been transferred to Justice Manoj Jain, and now Mr. Manoj Jain will hear this entire case. So this is a big win for Mr. Kejriwal, but again academically it's of no use. Now moving on to the next. Now this is actually a very important topic. We have been discussing about this particular thing for a very long period of time, that how National Testing Agency has failed multiple times when it comes to the biggest entrance examination of India. और हम अभी बात कर रहे हैं नीट की, राइट। सो अभी नीट एग्जामिनेशन को लेकर के जो लास्ट कॉनोड्रम हुआ था, दैट कॉनोड्रम टुक प्लेस इन 2024, जब फिर से नीट एनटीए के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि देयर इज अ पेपर लीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज नीट एंड एनटीए, a never ending love affair, NEET and NTA. So basically students, we know this NTA was created in 2017. Now a few facts about NTA जो आप लोग याद रख सकते हैं, that NTA was created in 2017. It is an autonomous body. It is an autonomous body registered as a society. Registered as a society under Societies Registration Act of 1967. And students, at the end of this class will solve 9 to 10 questions related to the 56th meeting of World Economic Forum. So that is also one important point. Now moving on to the next point. So it was created in 2017. It's an autonomous body. It was registered as a society under the Societies Registration Act of 1967. And primarily NTA was constituted to conduct कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT मोड में जो टेस्ट होते हैं इनको कंडक्ट करने के लिए हुआ था। नाउ नीट इज द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया with 2.3 million applicants. So what happened in 2024? There was an issue related to paper leak. तो उस टाइम पर यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी. A committee was constituted. पहले आप ये लिख लीजिए, then we'll move to the next point. What is this question? I didn't get your question, sir. We are studying to become rich. Why are you not rich? Why shall we learn from you? I mean, how could you say that I'm not rich? And see, basically, I believe that I'm rich actually because I'm following my passion. So in that particular context, there are very few people in this world who get a chance to follow their passion or to pursue their passion, and there are very few students, or there are very few people in this society जिनके पास में कोई passion होता है. So I do have a passion, and I'm getting an opportunity to pursue my passion, and
and I get an opportunity to teach students like you, जिनको मेरे से ये क्वेश्चन पूछने के लिए बैठी होती, मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले, इतने मतलब स्टूडेंट्स who have so much of courage to ask these kind of questions. So I feel myself extremely privileged. And Nandini, so I hope you have my you got my answer, and I hope you are satisfied with my answer. And I have um, I had money. I mean, I'm not that poor. I have money, right? So now moving on to the next point. Sir, it would be very difficult to talk in person. You can connect to the admin team of 12 minutes to CLAT, and they will tell you what should be the process that you must follow. Right, right. Nandini Singh. Okay, fine. Right. So Hari Gautam. So you can connect to the administrative team. They will connect you to the. They will explain you the entire process. Right. So now moving on to the next important point. So when this particular paper leak took place in, there were allegations that there is a leak in June 2024. So what happened कि June 2024 में ही लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस किया गया था, और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के राधा कृष्णन, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज के राधा कृष्णन committee. And who was Mr. K. Radhakrishnan? So Mr. K. Radhakrishnan was the former chairperson of Indian Space Research Organization. So under the chairmanship of K. Radhakrishnan committee, and a committee was constituted, and this committee was constituted in June 2024, and it submitted its report month of constitution of the committee or establishment of the committee, and it submitted its report in December 2024. Now moving on to the so you can visit the website Hari Gautam. You will get every kind of detail there. अभी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में you will get the link जहाँ से आप सीधे वेबसाइट पे कनेक्ट जा सकते हैं, और वेबसाइट पे you will find the number there. Now this particular committee was constituted to suggest reforms in NTA. To suggest reforms in NTA. Now मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, और ये रिपोर्ट अभी यूनियन गवर्नमेंट के पास में. बट इस कमिटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पे अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने कोई बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया है. एंड दिस पर्टिकुलर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रीस्ट्रक्चर the entire to suggest the entire organizational restructuring of the National Testing Agency. Now what is the latest development? You write all these points, then we'll move to the next point. You write all these points, then we'll move to the next point. So moving on to the next point. So the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports will on May 21 seek the views of top education ministry officials on the alleged NEET UG paper leak and on the reforms of the National Testing Agency, which conducts centralized admissions test for various higher educational courses, a Rajya Sabha notice said. Now the agenda includes a review of the implementation of the K. Radhakrishnan K. Radhakrishnan committee report on NTA reforms, as well as an update on the investigation into the alleged paper leak. The committee would be headed by senior Congress leader Mr. Digvijay Singh. Now basically, so this is something which we have to understand, that the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children and Youth have asked that they will meet on 21st of May, and during this particular meeting they will seek the review, और they will seek the view of education ministry कि उनका नीट यूजी पेपर लीक को लेकर के अभी क्या व्यू है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दिस पर्टिकुलर कमिटी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द के राधाकृष्णन कमिटी, दैट हाउ कुड दिस पर्टिकुलर कमिटी कैन proceed with the suggestions and the recommendations of the K. Radhakrishnan committee, because it has been almost 18 months since K. Radhakrishnan committee submitted its report, but there is no formal action taken by the
concerned government. And the next important point that we have to understand is that this committee suggested a lot of things like कि हमें डिजी एग्जाम सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, जहां पर स्टूडेंट का आधार कार्ड पूरा बायोमेट्रिक्स डिटेल ले लिया जाएगा ताकि हम हर एक तरीके के डिस्क्रिपेंसी को अवॉइड कर सकें. देन द कमिटी ऑल्सो सजेस्टेड मोबाइल टेस्ट सेंटर्स. नाउ व्हाट आर दीज मोबाइल टेस्ट सेंटर्स? कि बस के अंदर टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, बस के अंदर टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसमें हर तरीके का सुविधा अवेलेबल कराया जाएगा, लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई एंड एवरीथिंग, ताकि जो हिली एरियाज हैं वहां पर विदाउट एनी डिसरप्शन टेस्ट कैन बी कंडक्टेड. Now moving on to the next particular point that is important for us to discuss. So basically the Central Information Commission has said कि BCCI, Board of Cricket and Control in India, is not a public authority. बोर्ड ऑफ क्रिकेट एंड कंट्रोल इन इंडिया इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी. इसका मतलब क्या है? अगर बोर्ड ऑफ क्रिकेट एंड कंट्रोल इन इंडिया पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो आप बीसीसीआई के अगेंस्ट किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर सकते हैं अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट बीसीसीआई वाज रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1975. So it is neither established under the Constitution of India nor a special statute. कोई स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर इसको स्टैब्लिश नहीं किया गया, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर स्टैब्लिश किया गया. सो इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी. सो इफ इट्स नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, नो वन कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फ्रॉम द बीसीसीआई. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So basically I'll tell you a brief background of this particular issue. हाँ, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस का नेचर ही क्या होता है? रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग. एडवाइस और रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? दीज आर नॉन बाइंडिंग. जिस अथॉरिटी ने स्टैब्लिश किया उस कमेटी को, अगर उसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करे, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करना है दे कैन डिनाई इट. राइट नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट ईयर in March 2025, a large pile of cash was found at the residence of Delhi High Court Justice Yashwant Verma. अब मार्च 2025 में इनके घर से 25 करोड़ रुपए के आसपास में कैश मिला था. एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैश वाज डिस्कवर्ड बाय द फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि इनके घर पे आग लग गई थी. एंड द पीपल एट देयर रेजिडेंस, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, तो फायर डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने दे रिकॉर्डेड द वीडियो एंड सर्कुलेटेड इट ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया platforms. Now when this particular incident took place, Mr. Verma was not at his residence, he was at some other place. Now these allegations were of very serious nature, and after that a lot of things happened around this particular point. और उसके बाद में क्या हुआ, फिर एक रिमूवल मोशन इनके अगेंस्ट इनिशिएट किया गया. अब जब ये रिमूवल मोशन इनके अगेंस्ट इनिशिएट किया गया अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 विच टॉक्स अबाउट दैट ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, और हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके भी जो रिमूवल के ग्राउंड्स होते हैं दोज आर सिमिलर एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, इन तीनों अथॉरिटीज के जो ग्राउंड्स होते हैं रिमूवल के दोज आर सेम अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. अब जब एक एलिगेशंस इन पे लगे तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ स्टूडेंट्स कि रिमूवल मोशन इनिशिएट किया गया, और रिमूवल मोशन जब एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद में जस्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा मिस्टर ओम बिरला, ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी. अब ये चीज आपको तभी पता चल पाएगी जब आपने कल का थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर अगर देखा होगा, एनालिसिस, तो आपको पता होगा. अ 3-member इंक्वायरी कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मिस्टर ओम बिरला, और इस कमिटी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट करके फाइनली इट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. नाउ इन द मीन टाइम जस्टिस यशवंत वर्मा हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट. उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है. अब इस पर्टिकुलर कमेटी का जो भी रिपोर्ट है, इसके बाद में अभी तक या क्या एक्शन लिया जाएगा इस पर आज तक कोई क्लैरिटी नहीं हुई है. सो बेसिकली इट्स ऑफ लेट्स सी कि ये पर्टिकुलर कमेटी क्या डिसाइड करती है. Now moving on to the first article in the editorial section, it talks about the inclusive gender caregiving in India's employment sector.
कि किस तरीके से मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा सा हमें भी काम करने की और ज़रूरत है. नाउ मूविंग ऑन टू द दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दिस डजंट होल्ड मच ऑफ रिलेवेंस कि किस तरीके से इंडिया में वुमेन को मैटरनिटी लीव 26 वीक्स तक की पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जा सकती है, बट इट इज नॉट अवेलेबल टू द फादर्स, राइट. फादर्स के पास में पैटर्निटी लीव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बट मैटर्निटी लीव है. और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी किया था कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है मैटर्निटी लीव का, इट माइट हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द वुमेन इटसेल्फ. ठीक है, ये वुमेन की ग्रोथ के अगेंस्ट हो सकता है. नाउ और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जस्ट लाइक मैटर्निटी लीव वी शुड आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड पैटर्निटी लीव. एंड व्हाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेटेड फॉर द पैटर्निटी लीव? द रीजन वाज वेरी सिंपल. द सुप्रीम कोर्ट सेड that by only recognizing the concept of maternity leave, you are basically asserting a point that raising a child is only a woman's job, the father has no role in it, right? So by recognizing the concept of maternity leave, you are restricting the welfare of child only to the mother, whereas father should also participate in the entire process, right? So ये आप एक बार देख सकते हैं. Then we have strategic spark in India South Korea defense ties. So India and South Korea may a lot of development is taking place, and our defense minister Rajnath Singh will be visiting South Korea today. He is on a state visit to South Korea on 19th to 21st of May. Seoul में रहेंगे वो. Now this particular visit is is taking place after the visit of the South Korean president जो थे वो इंडिया आए थे. और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अब साउथ कोरिया जाएंगे. ये सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. 2 और 3 मई को वियतनाम के जो हेड थे, स्टेट हेड थे, वो इंडिया आए थे. और उसके बाद राजनाथ सिंह कहाँ पे गए? वियतनाम गए. और हमने 5800 करोड़ रुपीस के ऑलमोस्ट हमने क्या किए? डिफेंस टाइज साइन के. आई मीन it's a statutory right, it's not a fundamental right. I mean you can only claim maternity right, basically fundamental rights are only available against the state, right? But maternity leave आप किसी भी, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में भी, तो आप वहां पर भी क्लेम कर सकते हैं, एंड इट्स अ पेड लीव, राइट? सो अभी ये डिफेंस टाइज को हम स्ट्रॉन्ग करें. नाउ दिस इज द आर्टिकल जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. व्हाई हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन declared a public health emergency of international concern over the outbreak of Ebola? So on 16th of May, so day before yesterday, World Health Organization has declared the outbreak of Ebola in Democratic Republic of Congo as the public health emergency of international concern. Now let's talk about what is public health emergency of international concern. PHEIC, public health emergency of international concern. So basically World Health Organization declares public health emergency of international concerns under international health regulations, under international health regulations of 2005. So international health regulation is basically, it's a legally binding document related to the international health regulations, right? Now moving on to the next particular point, the last disease which was declared as public health emergency of international concern was not COVID, it was monkeypox, popularly known as mpox. 2023-24 में इसका आउटब्रेक हुआ था. ये भी आप याद रखेंगे. The last disease which was declared as the public health emergency of international concern was monkeypox. Now Ebola का जो crisis है, it has been there for a very long period of time. पहला जो शायद इबोला का केस था, that was recognized in 1970s, और तब से लेकर के अब तक ऑलमोस्ट 11,325 डेथ्स हो चुकी हैं. 1976 में पहली बार इबोला को रिकॉग्नाइज किया गया था, और वेस्ट अफ्रीका में 2014 से लेकर के कॉन्टिन्यूसली इसका आउटब्रेक होता जा रहा है. तो ये भी आप एक चीज़ याद रखेंगे. अभी इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि बिकॉज द फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी हाई, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और दूसरा चीज़ ये भी है कि इसके स्प्रेड होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट? तो इसीलिए इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट इट हैज़ बीन
declared as a public health emergency of international concern. Then Ursula von der Leyen is basically, शी इज अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी आई गेस. तो अभी ये वापस से जो पूरा का पूरा हमने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन किया था 27 जनवरी को, उसको लेकर के वापस से इन्होंने बोला कि वांट इट टू एग्जीक्यूट एज सून एज पॉसिबल. फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो वेसल्स सेल करेंगी, द वेसल्स व्हिच आर सेलिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, द ईरानियन अथॉरिटीज हैव फॉर्म्ड एन अथॉरिटी जो अब कोऑर्डिनेट करेगी इन शिप्स के मूवमेंट को लेकर के. ठीक है. Now this is very important. So in the month of October 2025 a lot of development took place. सबसे पहले कतर पे एक अटैक होता है, और कतर पे अटैक कौन करता है? इजराइल कतर पे अटैक करता है. और ये अटैक हुआ था एक बिल्डिंग पे जहां पे हमास के कुछ टॉप मिलिटेंट्स थे. अब इट वॉज बेसिकली द ब्रीच ऑफ द नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ कतार, कि आपने दूसरे कंट्री पर अटैक कर दिया. अब इसके बाद में जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे फेल्ट क्वाइट थ्रेटेंड. और सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया. उस डिफेंस अग्रीमेंट का नाम था SMDA, सिक्योरिटीज म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट. SMDA सिक्योरिटीज म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट. इट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया. और इस डिफेंस अग्रीमेंट के अंडर ये था, attack on one country would be considered as attack on other country. और इसमें पाकिस्तान ने बेसिकली न्यूक्लियर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की. पाकिस्तान ने बोला कि अगर हमें न्यूक्लियर वेपन भी यूज करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए, सो विल यूज न्यूक्लियर वेपन एज वेल. तो इसीलिए तो देखिए ना कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने जब $3 बिलियन वापस मांगे, तो सबसे ज्यादा फंड किसने प्रोवाइड किया? सऊदी अरेबिया ने प्रोवाइड किया. क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास में पैसे बहुत हैं, बट उनका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है. तो और पाकिस्तान के पास में क्या है? उसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास में पैसे नहीं है. राइट. सो इट वाज अ काइंड ऑफ डील. तो अभी जो ये वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में एज पर द सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने 8,000 ट्रूप्स और एक स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स और एक एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है सऊदी अरेबिया को अंडर दी सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट और अग्रीमेंट विच वाज साइंड इन अक्टूबर 2025 बिटवीन दीज टू कंट्रीज. तो पाकिस्तान ने 8,000 ट्रूप्स, एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स का और एरियल डिफेंस सिस्टम्स को सेंड किया है सऊदी अरेबिया में. इन द स्पोर्ट्स सेक्शन वी हैव नथिंग रेलेवेंट. राइट. तो ये हो गया आपका आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस. अब हम वापस आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, एंड दैट डिस्कशन वुड बी आज का सबसे फेवरेट पार्ट हमारा. टुडे इज 19th of May. दिस डेट शुड हैव, ये मैंने आज सुबह बनाया तो जल्दी में शायद डेट चेंज नहीं हो पाई है. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 56th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ May 2026. वी आर इन द मंथ ऑफ May एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ January 2026. आप लोग को फटाफट ये क्वेश्चंस के आंसर करने. हमें वी हैव एग्जैक्टली आई गेस 7 to 8 minutes टू कंक्लूड दिस इंटायर टेस्ट. तो आप फटाफट मुझे बताएंगे और हम फटाफट फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, एंड आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन नाउ. It is related to the 56th meeting of World Economic Forum. We have the first question with ourselves in front of us. So the first question is, the 56th annual meeting of the World Economic Forum was held in Davos, Switzerland from January 19th to 23rd. What was the official theme designated for this global summit? So you have to tell me what was the official theme of this particular summit, which started on 19th of January 2026. It was a 5-day summit. It took place between 19th to 23rd of January 2026. For question number A, we have 4 options: cooperation in fragmented world, a spirit of dialogue, stakeholder capitalism for a sustainable world, navigating the age of competition. So these are the 4 options in front of you. Which one of the following is the correct option? Question number 1.
For question number 1, the correct option is option C, a spirit of dialogue. Students will discuss about this particular thing called stakeholder capitalism, because this entire organization which was created in 1971, it was based upon the principle of stakeholder capitalism, but theme for 2026 was a spirit of dialogue. This was the official theme for this 56th summit of World Economic Forum, which took place in Davos, Switzerland. Now we'll move to question number 2. The Global Risks Report 2026 identified distinct threats to the global stability across short-term and long-term horizons. Which threat was ranked as the primary, most severe short-term 2-year risk globally? So these are the 4 options that we have with us. Option A, an armed conflict. Option B, climate change. Option C, geo-economic confrontation. And option D, misinformation and disinformation. So basically which is a short term and long term horizons में जो सबसे बड़ा risk है, threat है, वो क्या है? Question number 2. Question number 2. I'm waiting for your answer now. Question number 2. So for question number 2, the correct answer is geo-economic confrontation. Geo-economic confrontation is basically was identified as the primary top short-term risk over a 2-year horizon, overtaking armed conflict. So geo-economic confrontation is basically a short-term threat जिसको आइडेंटिफाई किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सैंक्शंस वगैरह और टैरिफ्स वगैरह जो इम्पोज किए जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ शॉर्ट टर्म थ्रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, and it has superseded armed conflicts. Right, now we'll move to question number 3. According to the Global Risk Report 2026, cybersecurity was identified as the number 1 risk specifically for India. What explicit structural reason was cited by the report for this targeted vulnerability? Option A, the absolute lack of domestic. सो इंडिया में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को क्यों सबसे नंबर 1 थ्रेट इंडिया के लिए बताया गया? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डोमेस्टिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. द सेकंड वन इज हाई डिपेंडेंस ऑन एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, अ रैपिड डिजिटल लीप आउटपेसिंग द नेशन साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज, एंड ऑप्शन डी, लो फाइनेंशियल एलोकेशन टुवर्ड्स द पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी. राइट, for question number 3, the correct option. Question number 3, anyone? I'm waiting for your response now. Question number 3. So for question number 3, the correct answer is option C, a rapid digital leap outpacing the nation's cyber defense कैपेबिलिटीज. तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, दोज चेंजेस आर वेरी क्विक एंड रैपिड. दैट्स व्हाई दिस इज अ नंबर 1 थ्रेट. नाउ ड्यूरिंग द 2026 समिट, इंडिया हाईलाइटेड अ मेजर क्लीन एनर्जी माइलस्टोन by revealing its current non-fossil fuel based installed electricity capacity. What is the exact capacity achieved by India, allowing it to reach its 50% non-fossil fuel capacity target 5 years ahead of schedule? Question number 4 is option A, 500 gigawatt, option B, 267 gigawatt, option C, 180 gigawatt, and option D, 350 gigawatt. तो इंडिया का 2030 फॉर क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. याद रखिएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से इंडिया का जो टारगेट है वो कितना है? इंडिया का टारगेट कितना है? 500 गीगावाट है 2030 तक, और हमने 5 साल पहले 50% इस टारगेट को मीट कर लिया है बाय एक्सटेंडिंग आवर कैपेबिलिटीज टू 267 गीगावाट. सो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 267 गीगावाट. हमारा टारगेट कितना है? हमारा 2030 तक का जो टारगेट है, दैट टारगेट इज 500 गीगावाट. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. The World Economic Forum announced the expansion of its network by establishing a new center for the 4th Industrial Revolution. Now, please remember this. The abbreviation for this 4th Industrial Revolution is C4IR. In India, during the 2026 meeting, in which Indian state is this newest C4IR center being set up? So, ये C4IR center जो ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? We have 4 options for question number 5. Option A, महाराष्ट्र, B, तेलंगाना, C, कर्नाटका, and D, आंध्र प्रदेश. Question number 5. C4IR इनिशिएटिव जो है, इसको कहां पे इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा?
So for question number 5, the correct option is option C. Option D. It would be set up in Andhra Pradesh. ये भी आप याद रखिएगा. It would be set up in Andhra Pradesh. C4IR, which is basically the fourth industrial revolution. इसका जो center है वो इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में establish किया जाएगा. Please remember this. Now we'll move to question number 6. The World Economic Forum released an AI adoption report titled Proof over Promise Insight on Real World AI Adoption for 2025 Minds Organization. So आप इस report का title भी याद रखेंगे. Proof over Promise Insights on Real World AI Adoption from 2025 Minds Organization in collaboration with Accenture. Which Indian multinational information technology company was explicitly recognized under this Minds program for practical AI deployment? We have 4 options. Option A, Tata Consultancy Services Limited. Option B, Tech Mahindra Limited. Option C, Infosys Technological Limited. And option D, Wipro Enterprises Limited. So we have to tell me which specific Indian company has been recognized by World Economic Forum which can deploy artificial intelligence in India. So we have 4 options for question number 6. Tata Consultancy Services Limited, Tech Mahindra Limited, Infosys Technologies Limited, and Wipro Enterprises Limited. For question number 6, the correct option is, for question number 6, the correct answer is Tech Mahindra Limited. Tech Mahindra Limited, option B. Question number 6, the correct option is option B. Now we'll move to question number 7. Now, during a high-level global panel titled AI Power Play, Union Minister Ashwini Vaishnav highlighted India's strategy to overcome the global GPU shortage. How many GPUs have been impaneled under India's public-private partnership model as a shared subsidized national compute facility? Option A, 10,000 GPUs, B, 25,000 GPUs, C, 38,000 GPUs, and D, 50,000 GPUs. So government ने total 38,000 GPUs को impanel किया है. So for question number 7, the correct option is 38,000 GPUs were impaneled by the government for public private partnership जिनको national compute facility के अंदर subsidized model में services provide की जाएंगी. Now up question number D, the core philosophy of the World Economic Forum is centered on stakeholder capitalism, a concept introduced by its founder Klaus Schwab. In which year was the forum formally recognized as an official international organization? So you have to tell me in which year this was recognized as the formal, international organization. World Economic Forum को कब formally recognized किया गया था as an international organization? So for question number 8, we have 4 options, students. Option A, 1971. Option B, 1987. C, 2015. And D, 1998. What is the correct answer for question number 8? Anyone? Question number 8. Chat box में आप please question number 8 type करके इसका answer देंगे मुझे. So for question number 8, in which year it was given the status of international organization? Right. So in 1971 it was established. तब इसके पास में international organization का status नहीं था. The status of international organization was given in the year 2015. So please remember this, the status of international organization was given in 2015. Now we'll move to the next point, and this is the last question for the day. Question number 9. To enhance legal and technical trust under its techno-legal approach to artificial intelligence governance, India's strategy focuses on creating technical tools capable of identifying deep fakes with what level of validity? Standard administrative clearance accuracy, peer-reviewed academic accuracy, court-administered admissible accuracy, or multi-ministerial consensus accuracy? Question number 9. सो बेसिकली इंडिया में जो डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स डेवलप किए जाएंगे, उनकी वैलिडिटी जो होगी वो होगी कोर्ट एडमिसिबल एक्यूरेसी. क्यों? अगर कोई डीप फेक जैसी चीज होती है तो उसको कोर्ट में उन सारे प्रूफ्स को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में 2-3 चीजें याद रखिएगा. करंटली जो इसके चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? बोर्जे ब्रेंडे. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट नेम्ड Klaus Schwab. This is the second point which you have to remember. Established in 1971 by Klaus Schwab. And the last point is, earlier it was known as European Management Forum, and it was renamed as World Economic Forum in 1987.
Right, so these are the 4 points established in 1971 as European Management Forum, renamed as World Economic Forum in 1987. It was founded by Klaus Schwab. Current president is Borge Brande, and it was declared as an international organization in 2015. Right, so students, this is all about today's analysis. I hope you would have liked it, and if you have liked it, please do like the video, drop your suggestions and feedback in the chat box and the comment section. Thank you so much for watching this video. Now I'll take your leave. This is all about today's analysis. So thank you for having me. And that's it from my side. Thank you so much, guys. We'll see you tomorrow at the same time. Till then, bye bye. Good night. Take care and rest. Take a good care of yourself. Bye.